Good evening, everyone. And on behalf of Anhad and Satark Nagrik Sangathan, a very warm welcome to all of you to today's discussion, where we are going to examine the bill that is being brought to Rajya Sabha in the last session of Parliament, the monsoon session of Parliament. And now there is a special session of Parliament, which is commencing tomorrow, and the bill is going to be taken up, which is the Election Commissioner's Appointment Bill. So we want to really understand from our panel of experts what the implications of this bill will be on the autonomous functioning of the Election Commission and what bearing it will have on free and fair elections in the country. So we all know that we pride ourselves in being the largest democracy in the world. Now, of course, the Prime Minister has called us the mother of democracy. But it is true that in the Constitution of India, that the Election Commission has been given a central role in the conduct of elections in the country. So Article 324 of the Constitution says that the superintendence, direction, and control of elections in the country is vested in the Election Commission of India. It's very critical, therefore, that the Election Commission function in an autonomous manner. It is not under the control of the ruling party or any other political party. And in fact, in March 2023, there was a very significant landmark judgment of the Supreme Court, where the court said that it is very important that the committee, the selection committee that selects the election commissioners of India should be independent. It should not be under the control of the executive. The principle that basically the Supreme Court upheld in that judgment was that the selection committee should not be under the control of the government. It should not have a preponderance of the executive, the representatives of the executive, and it should be a balanced committee. Now, towards the end of the monsoon session, the government introduced a bill in Rajya Sabha. It was done without any pre-legislative consultation. And this bill essentially does two things. One, it changes the composition of the selection committee from what was decided by the Supreme Court. The Supreme Court had said that the selection committee should comprise of 3 people. And till a bill is made, a law is brought in Parliament, the court had said that the selection committee should have the leader of opposition, the Prime Minister, and the Chief Justice of India. So this bill changes that composition. And the second thing that this bill does is that it repeals the law that was passed in 1991, which equated the salaries, the pensions, and conditions of service of the election commissioners and the chief election commissioner to those of the judges of the Supreme Court. So now this new bill that has been introduced basically says that the election commissioner's salaries, pensions, and conditions of service will be equated to that of a cabinet secretary. So we are seeing that, unfortunately, the way in which bills are being brought into Parliament, the way in which laws are being enacted, which are going to have a far-reaching impact on our democracy, on all our rights and our lives, are being brought in haste. They are being brought in complete secrecy very often. There is no pre-legislative consultation. Unfortunately, the ayes have it very quickly in the midst of a lot of confusion and chaos in Parliament, and there is no discussion and debate on very many important bills that are then made into laws which are applicable to our democratic republic. So this particular session, this webinar, has been organized so that we can unpack and understand what the implications of this bill are likely to be, which is going to determine how the election commissioners of our country are going to be appointed and what their terms of service are going to be.
So we have a very eminent panel with us from whom we'll be hearing, but because we have people from across the country, I'm also going to very quickly translate into Hindi. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनहद और सतर्क नागरिक संगठन की ओर से। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बिल पर जो कि पार्लियामेंट में लाया गया मॉनसून सत्र में, जो इलेक्शन कमीशन है, जो निर्वाचन आयोग है, उसके कमिश्नर्स की नियुक्ति कैसे होगी, उनकी सैलरी क्या होगी, उनकी पेंशन क्या होगी, इस सब को लेकर। और हम जानते हैं कि हमारा देश जो है, और हम इसमें बहुत प्राइड भी महसूस करते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और इसमें लोकतंत्र में चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष रूप से बहुत जरूरी है कि हो, और चुनाव कराने की जो जिम्मेवारी है वो निर्वाचन आयोग पर है, चुनाव आयोग पर। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान, उसमें लिखा गया है कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो हमारे चुनाव कराएगा, सही तरीके से कराएगा, निष्पक्ष तरीके से कराएगा। और अभी हाल ही में मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी जिसमें उन्होंने कहा कि जो निर्वाचन आयोग में जो आयुक्त हैं, जो चुनाव के आयुक्त हैं, वो किस तरीके से उनका चयन होगा वो उन्होंने इसमें तय किया। उन्होंने कहा कि जो चयन होना चाहिए वो कोई एक पार्टी नहीं करनी चाहिए, रूलिंग पार्टी को नहीं करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को नहीं करना चाहिए। उसके चयन के अंदर जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। अभी जो बिल आया है पार्लियामेंट में, संसद में, जो कि सरकार लेकर आई, बिना किसी चर्चा के बिल लेकर आई सरकार, राज्यसभा में उसे पास कर दिया गया। उस बिल में दो चीजें की गई हैं। पहली चीज, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी कही थी सिलेक्शन की होनी चाहिए, चयन की कमिटी होनी चाहिए, उसका प्रारूप बदल दिया गया है। और दूसरी चीज जो की गई है, हमारे देश में कानून था 1991 1991 का कानून था, जिसमें लिखा गया था कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी जो पगार है, सैलरी है, पेंशन है, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज जितना होगा, तय होगा। लेकिन अब इस बिल में उसको बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह उनकी जो सैलरी है और जो पेंशन्स हैं वो अब सेट कर दी गई हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर। तो इन सब चीजों का क्या प्रभाव होगा हमारे लोकतंत्र पे, चुनावों पर, हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसके इंडिपेंडेंट काम करने के तरीके पर, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल लाए जा रहे हैं हमारी संसद में, बिना लोगों के साथ बातचीत करे, चर्चा किए हुए, बिना विदाउट इवन कोई भी चर्चा होती नहीं है संसद के अंदर भी, और एक शोर शराबे में बिल को पास कर दिया जाता है। तो बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों के ऊपर उनको समझें और उन पे चर्चा करें। हमारे साथ आज प्रशांत भूषण है, हमारे साथ SY कुरैशी जी हैं, संजय कुमार हैं, और MG देवसहायम हैं जो बातचीत करेंगे इन मुद्दों पर। और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी प्रशांत भूषण जी को कि वो अपनी बात रखें। प्रशांत, जो केस है सुप्रीम कोर्ट में जिस पे जजमेंट आई, उसमें प्रशांत मेन वकील भी थे, उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए और एक बहुत बढ़िया ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया। प्रशांत, आप इस बिल के ऊपर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और ये बिल अब क्या करने जा रहा है, और क्या प्रभाव होगा इसका हमारे जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्वतंत्रता पर, और आपको क्यों लगता है कि इस तरीके का बिल इस समय पे लाया जा रहा है? इन सब चीजों पे अगर आप रोशनी प्लीज डालें इन द नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि। थैंक यू अंजलि। तो एक्चुअली शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि चुनाव आयोग का चयन प्रेसिडेंट के थ्रू होगा जब तक कि पार्लियामेंट कोई इस पर कानून ना बना दे।
जब इस पर कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, तो उस समय कई लोगों ने ये बोला था कि चुनाव आयोग सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए, और इसलिए सबने उम्मीद जताई थी कि जो कानून बनेगा उसमें चयन की प्रक्रिया भी सरकार से स्वतंत्र होगी। अब हुआ ये कि बहुत साल तक कानून नहीं बना, और सेशन साहब के आने के बाद कई साल तक चुनाव आयोग सरकार से स्वतंत्र रूप में काम करता रहा। लेकिन पिछले 8-10 साल से ये देखा जा रहा था कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता खत्म हो गई थी, और ऐसे ऐसे लोगों को वहां नियुक्त किया जा रहा था जो बिल्कुल सरकार के पिट्ठू थे। एक साहब तो ऐसे आ गए जिनके जो एयर इंडिया के चीफ भी थे उससे पहले, और जिनके बारे में रेडियो टेप्स में एक कॉन्वर्सेशन है जो ये दिखाता है कि वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका में बड़ा भ्रष्टाचार है। चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा के एक केस में जजमेंट देने के लिए 9 करोड़ रुपए उन्होंने लिया। वो आदमी मेरे पास आया था, उसने मुझे दिखाया वो जो फैसला उनको उसको कल मिलने वाला है। तो यानी कि ऐसे ऐसे लोगों को अपॉइंट कर दिया गया जिनको पूरी जानकारी होने के बाद भी कि भाई भ्रष्टाचार से कोई फैसला कोर्ट का कराया गया है, उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। तो जब हम लोगों ने कई पिटिशंस फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जिस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला और फिर कानून बना कि उसकी नियुक्ति एक 3 मेंबर कमेटी करेगी जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस होंगे। इस तरह के रिकमेंडेशन कम से कम 5 अलग अलग कमेटियां कर चुकी हैं, जिसमें लॉ कमीशन भी था और भी कई सरकारी कमेटी थी, क्योंकि ये मामला कई कम से कम 30 साल से 40 साल से अलग अलग कमेटियों के पास गया, और उन्होंने सबने रेकमेंड किया कि भाई इस तरह का कानून बनना चाहिए कि एक स्वतंत्र चयन समिति हो। और ज्यादातर लोगों ने इसी तरह की कमेटी बोली कि भाई प्रधानमंत्री हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो और चीफ जस्टिस हो उसमें। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कुछ साल पहले हम लोगों ने फाइल किया, और उस पर एक संविधान खंडपीठ बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, they heard the matter, and finally the judgment that they gave was to the effect that the independence of the election commission comes not merely from the fact that they are functionally independent in the sense that the government cannot remove them except by a process of impeachment, like that of for removal of High Court and Supreme Court judges. But its independence also comes from the selection. And they said very clearly that this principle, that selection is equally important to secure the independence of any body, was laid down in the Judicial Appointment Commission's case, where a 7-judge bench of the Supreme Court held that the Judicial Appointment Commission's Act, which was a constitutional amendment, was unconstitutional. It violated the basic structure of the Constitution because the government still had substantial scope for interfering with the selection of judges. So therefore, they said that the selection of judges has to be completely independent of the government in order to secure the independence of the judiciary. In the Election Commission case, they reiterated the same principle. And in fact, they had a very live example before them, because during the hearing of this case, when I pointed out that one post of the election commissioner is still vacant, and that should also be that we have an interim application where we are praying that that selection should also be made by an independent committee. At the very before the next hearing, which was just 4 days later, the government moved very quickly to fill up that post and appoint an election commissioner
completely arbitrarily. The name of 3 people were plucked out from nowhere without any basis, completely arbitrarily by the law minister. Same day, the Prime Minister approved the appointment of this one gentleman called Arun Goel, and same day he was given premature retirement from the Punjab cadre, where he was a serving IAS officer, in order to facilitate his appointment, and the government presented the court with a fait accompli. The court had the occasion to look into this very carefully, examine the file, and also came to the conclusion that this was done in a very arbitrary manner in order to preempt the court's judgment. Now, so the court said that in order to secure the independence of the election commission, the appointment must also be by an independent committee. And they said that since several committees have already recommended a selection committee of Prime Minister, Leader of Opposition, and Chief Justice, they passed an order that till such time that a law is made by Parliament, this committee will select the election commissioners. Now, it was expected that the law which would be made by Parliament would be in tune with this constitution bench judgment of the Supreme Court. But unfortunately, the new bill which has come, as Anjali has pointed out, changes the composition of the selection committee. The Chief Justice has been removed and replaced by a cabinet minister appointed by the Prime Minister. Therefore, you have Prime Minister, another cabinet minister appointed by him, and Leader of Opposition. So Leader of Opposition is in a minority, and essentially the government can still select whoever they want as election commissioner. And we have seen that wherever there are these kind of committees where the government dominates the selection process, they override the objections of the Leader of Opposition, which we have seen in the appointments of information commissioners also. So again, through this act, and we assume that it will be passed in the Lok Sabha also in this session, because the government has a majority in the Lok Sabha, and in any case, no discussion is virtually permitted in Parliament these days. And laws and bills, sometimes as many as 10 bills are passed in 5 minutes amidst a lot of din and shouting, without any real voting or counting of votes also. So we assume that this will be passed. But in my view, this law will be unconstitutional, because it goes against the basis on which the Supreme Court has said that we need an independent selection committee for election commissioners. Because the court said that in order to ensure the functioning of democracy, we need an independent election commission, which has complete control over the conduct of elections. And in order to ensure an independent election commission, we need to secure its appointments by an independent selection committee, and it should not be controlled by the government, in which case it will not be an independent election commission, and thereby it will jeopardize the functioning of our democracy. So in my view, this law will be unconstitutional. It can be challenged on the ground that it violates democracy, which is a basic feature of the Constitution. And in my view, it should be struck down by the Supreme Court. We have had such precedents earlier also, where the Supreme Court had earlier held in the judgment of the Association for Democratic Reforms that in order to ensure proper democracy, the voters have a right to know the criminal antecedents and assets and liabilities of candidates. Now, in order to overcome that judgment, the government brought a bill to nullify this, saying that no such declaration has to be made by candidates, which the Supreme Court had directed, that every candidate has to declare on affidavit his criminal antecedents, educational qualifications, and his assets and liabilities. Now, that law, which was brought to nullify this judgment, was challenged
immediately by the PUCL in another petition, and fortunately the Supreme Court struck down that law on the same ground that, look, we had given the earlier directions in order to secure democracy, in order to secure the right of information, right to information of voters, which is part of Article 19(1)(a), that is fundamental right to free speech also. So therefore, on that basis, they struck down this law, and I believe and I hope that the Supreme Court will also strike down this law on the same ground that this kind of selection committee controlled by the government will violate the free election commission, which is free of government influence and control, and will thereby also violate democracy. So just one more thing I wanted to say. On this one nation, one election, I just want to use this opportunity to just point out why one nation, one election, which is very much in the news these days, is not possible in a parliamentary democracy. See, in a parliamentary democracy where the government's survival depends upon its commanding majority support in the assembly or in parliament, if the government collapses mid-term, then obviously you will, if you want to maintain democracy, you will have to have fresh elections mid-term. You cannot wait for the remaining term, which may be 2, 3, even 4 years, in order to and keep the state or even the center under president's rule. Of course, the center can't be kept under president's rule, and therefore this one nation, one election is only possible if you switch from a parliamentary democracy to a presidential form, like in the US. In the US, because the president is one person, he doesn't depend upon for survival on his getting majority support from the Congress or from the Senate, etc. Therefore, you can have, and if the president dies, the vice president becomes the president. If the vice president dies, the speaker becomes the president. Therefore, the survival of the government doesn't depend on the government having majority support in parliament, which can always change on account of splits or defections, etc. So therefore, one nation, one election is not possible unless you fundamentally change our system to a presidential system. And I don't think this government is capable of doing that. So I believe that the only reason why this kind of balloon has been floated is for them to try and postpone the assembly elections in these 5 states, which are coming up in November. And I believe that the government would probably want to pass a resolution in this session, special session of parliament, to the effect that because we have appointed a committee to look at one nation, one election, therefore, these assembly elections should be postponed to coincide with the general elections, which are coming up in April, May next year. So I just wanted to say this because this is something which is not very well understood by people. So thank you very much, Anjali. मैं हिंदी में इसको नहीं translate करूँगा, आप कर दीजिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत. Thank you so much for joining us and also explaining to all of us what the Supreme Court said and how this bill can be very dangerous for the autonomy and independence and the independent functioning of the Information Commission. प्रशांत ने कई बातें हिंदी में कही already और कुछ चीजें उन्होंने अंग्रेजी में भी उनका जिक्र किया, तो मैं बहुत ही ब्रीफली हिंदी में बता देती हूँ कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा उठा कि ये किस तरीके से चयन होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर्स का, नियुक्ति कैसे होनी चाहिए आयुक्तों की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक सिलेक्शन कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो कि
एग्जीक्यूटिव के, सरकार के कंट्रोल में नहीं हो पूरी तरह से, जिसमें कि केवल रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक कानून पार्लियामेंट के जरिए आएगा और आना चाहिए, और प्रेसिडेंट उस सिलेक्शन कमिटी जो उस बिल में बनाई जाएगी, कानून में बनाई जाएगी, उसके रिकमेंडेशन पर अपॉइंटमेंट्स करेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि वो कमिटी बनाने के लिए एक लॉ लाया जाए, लेकिन जब तक लॉ नहीं लाया जाता, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक कमिटी होनी चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। देश के जो मुख्य हमारे न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें रहना होगा। तो ये 3 लोगों की चयन कमिटी बनाई गई, सिलेक्शन कमिटी, और इनका काम दिया गया कि ये सिलेक्शन करेंगे इलेक्शन कमिश्नर्स की। अब जो बिल आया है उसमें सरकार क्या कह रही है, वो अब ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रखा जाएगा। तो ये तो सीधा हो गया 2:1, मतलब 2 लोग सरकार की ओर से और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो मेजॉरिटी में सरकार के नुमाइंदे यानी कि रूलिंग पार्टी ही रही। तो ये जो है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इलेक्शंस को अगर हम चाहते हैं कि सही से हों, और उसके लिए हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होने के लिए अब जरूरी है कि सिलेक्शन कमिटी जो है वो भी इंडिपेंडेंट हो। तो इस तरीके का जो चयन कमिटी बनाई गई है इस बिल में, ये सरासर गलत है। और प्रशांत ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उनके हिसाब से, ये संविधान के खिलाफ जाती है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उस जजमेंट का जो बेसिस है जिसके ऊपर वो जजमेंट दी गई, वो यही है कि हमें जरूरत है एक इंडिपेंडेंट, एक निष्पक्ष सिलेक्शन कमेटी की, जो कि चयन करे इलेक्शन कमिश्नर्स का। आपने ये भी कहा कि जिस तरीके से बिल पास हो रहे हैं पार्लियामेंट में, हमारी संसद में, तो ये शायद बिल बिना किसी चर्चा के सही तरीके से पास हो जाएगा। तो इसको चैलेंज करने की जरूरत पड़ेगी, और शायद चैलेंज होगा भी ये बिल। और प्रशांत, आपका मानना है कि ये बिल जो है ये सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर सकती है? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है जब ऐसे से बिल आए हैं। आपने 1 नेशन 1 इलेक्शन, जिसके बारे में भी आजकल खूब चर्चा चल रही है, ये सब शगुफे छोड़े जा रहे हैं। तो आपने कहा कि ये जो इस तरीके का 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है, ये हमारे संविधान के तहत नहीं हो सकता। इसके लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ इलेक्शंस की जरूरत पड़ेगी। आपको नहीं लगता कि इस तरीके का कानून अभी आ पाएगा? पर शायद इसको इसके ऊपर कोई कमिटी तो बनी है, पर इसके ऊपर चर्चा हो, और शायद ये कहा जाए कि जो अभी आने वाले स्टेट के इलेक्शंस हैं, चुनाव हैं, उन्हें आगे बढ़ा दिया जाएगा, उन्हें डिले कर दिया जाएगा। ये आपका मानना है प्रशांत? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, थैंक यू वेरी मच। And now I'm going to request Sanjay Kumar. He is a professor at CSDS, and he's been studying and documenting the functioning of the Election Commission. And there was a Citizens Commission on Elections that was set up under the chairmanship of Justice Madan Lokur, which put out a report on various aspects of electoral reforms that are required. One of the aspects of that report, one of the chapters, dealt with how the Election Commission of India has been functioning. What are the various concerns and problems that have been coming up in the functioning of the Election Commission of India? संजय जी, आपका स्वागत है, और आप प्लीज अपनी बात रखें over the next 8 to 10 minutes. थैंक यू अंजलि जी। प्रशांत जी ने बहुत डिटेल से बताया कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट की क्या कानून, क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, और किस तरह के कानून लाने की संभावना है, व्हाट काइंड ऑफ अ लॉ विल बी ब्रॉट अबाउट।
ये जरूर है कि जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, अगर उसके आधार पर एक संस्था का गठन किया जाता है विच सीम्स टू बी वेरी न्यूट्रल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होते, विपक्ष के नेता होते, प्राइम मिनिस्टर होते, तो वो एक न्यूट्रल सा एक कमिटी दिखाई पड़ता। लेकिन हम सबको पता है कि सरकार जो विधेयक लाई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के एक कैबिनेट मंत्री को डाल दिया गया। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? सीधा सीधा अर्थ यह है, सरकार जिसे चाहेगी उसे सीईसी के रूप में, ईसी के रूप में नियुक्त कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि कमिटी में डिसेंटिंग वॉइस जो है वो बहुत कम होगा, एक होगा। कैबिनेट मंत्री का प्रधानमंत्री के विचार से मेल ना खाने की गुंजाइश तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ती। तो पूरा पूरा अर्थ ये निकलता है कि सरकार के कंट्रोल में इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का कंट्रोल रहेगा। मुझे लगता है कि शायद हम जितनी चीजों का अंदेशा कर रहे हैं, मतलब जो इतनी एंटिसिपेट कर रहे हैं, आई एम कनेक्टिंग इट विद जो हमारा टाइटल है, विल इट बी एन एंड टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मुझे लगता है हम कम से कम मैं इस टाइटल से को एंडोर्स नहीं करता। मुझे नहीं लगता है कि मामूली सा सिर्फ अगर ये परिवर्तन हो जाए तो इससे इट इज गोइंग टू बी एंड टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और मेरे कहने का कारण क्या है? कारण ये है साफ साफ कि इवन इन द पास्ट, आज तक जो इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट होते हैं, सीईसी के, इलेक्शन कमिश्नर्स के, तो क्या इसमें सरकार का रोल नहीं है? सरकार अपनी मर्जी से करती है। बहुत चीजों का जिक्र किया अभी प्रशांत जी ने, कई अपॉइंटमेंट्स के। अभी भी सरकार का से उतना ही है जितना कानून, अगर नया कानून सरकार के मन मुताबिक बन गया उतना ही से रहेगा। आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू चेंज गवर्नमेंट पोजीशन इन अ बिग वे। इट्स नॉट दैट गवर्नमेंट विल हैव अ मच बिगर से। और मच बिगर का मतलब क्या है? आज भी सरकार जिसे, मतलब सरकार की मर्जी से ही सीईसी और ईसी का अपॉइंटमेंट होता है। तो मुझे लगता है कि हम, खासकर डर बहुत हो रहा है, लग रहा है कि अब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होगा। और जब पहले भी सरकार के कंट्रोल में इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट होते रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि चुनाव, सारे के सारे चुनाव पे हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। एटलीस्ट आई डोंट हैव एन एविडेंस टू put a question mark on freeness and fairness of election on each and every election or a very large number of election. And what is an evidence, at least I have, to suggest that largely elections are free and fair, largely. And then I will also come to the anxieties. I'm not saying that there are no anxieties. There are anxieties which has multiplied during last 5-7 years. That anxieties I am also going to highlight. लेकिन क्या ऐसी चीज है जो जिससे मुझे लगता है कि I should not be, at least I don't have a huge anxieties about ये ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक्ड है, चुनाव पूरा rigged है, because the governments have changed at the state level, at the national level several times. Not only in BJP's time, even in Congress time, states में रीजनल पार्टियां, वहां भी सरकारें बदलती हैं, राज्यों में सरकारें बदली हैं और केंद्र में सरकारें बदली हैं. It's not that last 10 years or 9 years, ever since BJP has come to power, BJP has not lost election. BJP has lost election. If everything was under control of BJP, if everything was under the control of the government, they would have made sure that no election, they are not losing election. There are also counter view. I know that no, they want to do it systematically. Okay, but I don't have an evidence, so I don't buy this argument that entire elections or a very large proportion of elections are rigged, etc. But as I said, it's not that there are no anxieties. Anxieties to hai. And I do see changes in the way Election Commission has started functioning, especially if I look at the last 7-8 years. And what are the changes? We can look at, basically, everyone, if you have a careful look at the functioning of the Election Commission with regard to two things, just look at the two things. Just look at a very simple announcement of the dates. Prashant ji ne one nation, one election ka zikr kiya, and I will also connect one thing with that. Jab kuch samay pehle, because this one nation, one election is being, is being talked about by Prime Minister over last, 2019 election ke pehle mein bhi, he had mentioned that one nation, one election hona chahiye. I think an year ago,
the then CEC almost held a press conference. It was not a press conference, but a big report came out in the newspaper that he briefed the media saying, election commission तो तैयार है, one nation one election कराने के लिए election commission तैयार है, we only need instruction from the government. जिस दिन सरकार हमें कहेगी हम करा देंगे. And उसके बाद क्या होता है? And this is, I am saying, raising the concerns. क्या concerns है? After that, elections take place for two states, Himachal and Gujarat, and the two states goes to poll on two different dates. Not only the two states goes to poll on two different states, but even the dates of the two state assembly elections were announced on two different states. So there must be something. What was the and the explanation given by the election commission was, पहले भी हिमाचल और गुजरात के चुनाव अलग अलग तारीखों पे होते रहे हैं. This has been the precedence. तो इसी के लिए हमने 2 तारीख पे वो करा रहे हैं और हिमाचल में बर्फ पड़ रही होगी, etc., etc. Not very sound argument. And also the dates were announced on 2 different dates. And if you look at what was happening, what kind of an announcement was being made by the government in Gujarat and in Himachal between that time, you will get a sense that क्यों ऐसा हुआ. And this was not the first time. There are several instances. आप अगर 2022 के यूपी के चुनाव को देखें, so there were lots and lots of, not, I won't say those as speculation, but in the media they were prepared that आज date announce होने वाले हैं, and then suddenly gets postponed, और वो postpone होता गया, और फिर जाकर के, and then you just track what was happening when the dates were being postponed, and you will figure out कि भाई सरकार जो कहते हैं कि announcements करने में busy है, तमाम तरह की announcements हो रही हैं. 2019 का लोकसभा elections, I think that's the only time, maybe Quraishi ji can correct me if I am wrong, this is the only instance when the date was announced on a Sunday evening, 5 o'clock. And if you look at the events which were happening during the day or a day before, आपको सब पता चलेगा. तो इन सब चीजों को आई एम नॉट सेइंग कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉजालिटी है, बट कोरिलेशन थोड़ा थोड़ा दिखता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी एक खास दिन डेट अनाउंस किया या डेट्स बढ़े जा रहे हैं, अनाउंस नहीं किया जा रहा, और किस तरह की चीजें हो रही हैं, ये देख के ये तो लगता है कि जिस तरह के इलेक्शन कमीशन की हम अपेक्षा करते हैं और जो हम कहते हैं रोल मॉडल है, कम से कम वैसा काम तो नहीं हो रहा है. एंड एज अ सिटीजन, एज informed citizen, we should have anxieties, and these are the anxieties which we are sharing. ये anxiety तो है कि जिस तरह से election commission should not be subdued under the control, it should not function under the control of the government, and there are several hints. इसको देख के लगता है कि भाई ये dates भी पता नहीं कौन select करता है, which government body is actually selecting the dates. Announcement भले election commission कर रहा हो, so anxiety तो है. And the second part is model code of conduct के violation. When the campaign takes place, there are charges, counter charges, allegation and counter allegation by the ruling party members and the opposition members, that these are the cases of violation of model code of conduct. और उसके बाद अगर आप plot करें पूरे पिछले 10 साल में, 5 साल, 8 साल में, what kind of judgment has been given by, or what kind of a punishment has been given by, prescribed by the election commission model code of conduct के violation पे, यानी उसको सिर्फ आप segregate करें, जो ruling party के लोग हैं जब उनके बारे में शिकायत होती है, what kind of judgment comes, and जब वो non ruling party, opposition party के जो लोग हैं उनके बारे में जब शिकायत होती है तो किस तरह के judgments आते हैं. और बड़े विश्लेषण की जरूरत नहीं है. You don't need to analyze these with, जो कहते हैं analysis का मतलब ये सॉफ्टवेयर, वो टूल्स, ये मैकेनिज्म, कोई जरूरत नहीं है. ये दोनों चीजों का जो मैंने जिक्र किया, इसके लिए कोई बड़े विश्लेषण की कोई जरूरत नहीं है, कोई बड़े सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है. सिर्फ इसको अगर आप प्लॉट कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां तो हैं, और शायद अंदेशा ये है, सस्पिशन ये है कि जिस तरह से अब इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति की बात हो रही है, मे बी इस चीजों में ये चीजें और आगे बढ़ने वाली हैं. और हमें लगता है कि हमारा प्रयास होना चाहिए, कम से कम हमारे तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि इसको किस हद तक रोका जा सके, जिससे
चुनाव हमारे देश में निष्पक्ष कराए जा सके। आई थिंक अंजलि जी, आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच संजय जी, एंड यू वर बाइलिंगुअल, आपने अपनी बात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से आपने जो बातें कही बहुत जरूरी है जो अभी हो रहा है उसे समझने के लिए। आपने कहा कि सिलेक्शन कमेटी जिस तरीके की सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैसी पहले भी नहीं थी, बावजूद उसके चुनाव होते रहे। तो कुछ हद तक कि क्या चुनाव अब बिल्कुल खराब तरीके से होंगे वो कहना भी शायद सही नहीं होगा, लेकिन आपने कुछ बहुत जरूरी चीजें हमारे सामने रखी। आपने कहा कि इस अभी जो चुनाव आयोग का जिस तरीके से फंक्शनिंग चल रही है वो बहुत सारे कंसर्न्स और एंजाइटीज हमारे सामने खड़े कर रही हैं। आपने जिक्र किया कि जब डेट अनाउंस होती है चुनावों की, व्हेन द डेट्स आर अनाउंस्ड, तो वो कौन कर रहा है अनाउंस, वो तो हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बट तय कौन कर रहा है वो लोगों को समझ में आ रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से उन डेट्स को तय नहीं कर रहे, बिकॉज वो डेट्स जिस तरीके से तय की जा रही हैं, अनाउंस की जा रही हैं, वो रूलिंग पार्टी पहले उन्हें मालूम होता है, बाद में चुनाव आयोग बताते हैं लोगों को कि डेट क्या होगी। कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स होनी होती है जो रूलिंग पार्टी करती हैं, चुनाव की डेट उसके आर पार तय होती है। वैसे ही आपने कहा कि जो हमारे देश में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जिसके हिसाब से चुनाव होने चाहिए, क्या तरीका है सही जिसके हिसाब से चुनाव होने चाहिए, जब वो तरीका सही से नहीं फॉलो किया जाता और शिकायतें आती हैं रूलिंग पार्टी से और ऑपोजिशन पार्टी से, तो उन शिकायतों को कैसे डील किया जाता है वो बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है। अकॉर्डिंग टू यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन एंड अंडरस्टैंड, एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेयर द एंजाइटी इज कमिंग फ्रॉम, दैट the way in which the ruling party is dealt with and punished for violation of the model code of conduct by the Election Commission of India is very different from the way the opposition party is dealt with. So ये सारी चीजें निष्पक्षता जो है इलेक्शन कमीशन की उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, और शायद इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो बिल आया है और जिसके पास होने की पूरी संभावना है इस सेशन में, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, हमें बताया जा रहा है कि कुछ चंद बिल्स के लिए, और उसमें से ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बिल है शायद जो कि लाया जा रहा है, तो इसको हमें समझने की जरूरत है कि क्या ऐसा बिल आना चाहिए, और क्या जिस तरीके की सिलेक्शन कमेटी जिसके अंदर सरकार बेसिकली, जैसे आपने कहा, जिसको चाहे उसे इलेक्शन कमिश्नर बना सकती हैं, नियुक्त कर सकती हैं, क्योंकि 2:1 की मेजॉरिटी है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो हमें समझने की जरूरत है कि चिंता है लोगों को, और ऐसा बिल शायद अगर आया तो उससे ये चिंताएं कहीं पर थमेंगी नहीं, और perhaps it will not be good for the autonomy of the Election Commission if this bill is brought in. Thank you very much, Sanjay ji. And I'm going to now request Mr. S.Y. Quraishi. Mr. Quraishi needs no introduction. He has been the Chief Election Commissioner of the country. And Mr. Quraishi, आपका बहुत-बहुत स्वागत है. Thank you for joining us today. हम आपसे समझना चाहेंगे, आप रह चुके हैं निर्वाचन आयोग में, चीफ रह चुके हैं, आपने इतने चुनाव कराए हैं, आप ये सारी चीजें जिनके बारे में चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, अभी संजय जी ने भी जो बातें कही, आप इनको कैसे देखते हैं, स्पेशली जो अभी बिल आया है उसके प्रसंग में, और यहाँ पर इन एडिशन टू द सिलेक्शन कमिटी एक सर्च कमिटी भी बनाई जा रही है इस बिल के तहत, और साथ ही में जो चेंज किया गया है सैलरीज, पेंशन्स और कंडीशंस ऑफ सर्विस का इक्विवेलेंस, अभी तक एटलीस्ट एज अ ले पर्सन हम ये समझते हैं कि अगर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं दे आर इक्वेटेड
to judges of the Supreme Court, तो वो एक stature दिया गया था election commissioners को. ऐसा नहीं है that the salaries per se might be very different, but the fact that the judges' salaries and terms of service, etc., are decided by the parliament, whereas now it is being equated to a cabinet secretary. आप इन सब चीजों के ऊपर अपनी राय अगर प्लीज हमारे साथ शेयर करें. Over to you. थैंक यू अंजलि जी. पहले तो मैं इजाजत चाहूंगा कि मैं हिंदी में ही बोलूं. मेरी फीलिंग है, मैं जो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट देख रहा हूं कि इसमें देवासायम जी के अलावा सब हिंदी समझते हो. देवासायम साहब हरियाणा काडर के अफसर हैं, वो मुझसे भी अच्छी हिंदी बोलते हैं और जानते हैं, तो इसलिए आपको शायद ट्रांसलेशन करने की भी जरूरत नहीं, हिंदी से हम सब काम चला सकते हैं. दूसरा मेरा सुझाव ये होगा कि आपने जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा है बहुत इम्पोर्टेंट है और 1-1.5 घंटे में इसको हम जस्टिस कर पाए ये भी बहुत होगा. इसमें जो वन नेशन वन इलेक्शन जो और भी बड़ा इशू है उसको इसमें उलझाना, हम दोनों इशू डाइल्यूट हो जाएंगे. तो मैं उस टॉपिक को स्थगित रखना चाहूंगा कि आप उसके ऊपर एक अलग से एक प्रोग्राम करें, और बहुत कुछ उस पर कहने को है, इससे भी ज्यादा कहने को है, इसलिए उसको इसे हम न मिक्सअप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अब इस बिल पे आते हैं. इस बिल में सबसे पहले मैं इसकी पॉजिटिव बात बताना चाहूंगा कि इसमें 2-3 पॉजिटिव चीजें भी हैं. तो एक तो सबसे पहले आज तक इलेक्शन कमिश्नर कौन हो सकता है ये क्वालिफिकेशन कहीं लेट डाउन नहीं थी. तो सड़क से किसी को उठा के लगा सकते थे, किसी भी आइडियोलॉजी के किसी हर प्रकार के लोग घूमते रहते हैं, उनमें से किसी को भी लगा सकते थे, कोई रुकावट नहीं थी. बल्कि जब भी पिछले 10 साल में इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती थी तो हमारा दिल धड़कता था कि देखिए ये ब्यूरोक्रेसी से हटके कहीं किसी और को तो नहीं लाया जाएगा, लेकिन वो सिविल सर्वेंट को ही लाते रहे, जो कि पिछले 70 साल का ट्रेडिशन है और जिस ट्रेडिशन ने हिंदुस्तान के इलेक्शन को ग्लोरी दी है. उन्हीं ब्यूरोक्रेट जिनको बाबू और कंटेम्प्चुअसली इनएफिशिएंट, लेजी एंड करप्ट कहते हैं, वही बाबू इलेक्शन कमिश्नर आए और उन्होंने दुनिया में हिंदुस्तान के इलेक्शन के झंडे गाड़े. तो जो एक अनसर्टेनिटी थी कि ये बाहर से भी कोई लाके लगा दिया जाए, वो इस बिल ने खत्म करने की कोशिश की कि क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दी. और क्वालिफिकेशन अच्छी उन्होंने निर्धारित किए कि सेक्रेटरी या सेक्रेटरी रैंक का कोई अफसर ही होगा. तो जो सिस्टम अभी तक एडहॉक था और हम सिर्फ उम्मीद करते थे कि शायद यही चलता रहेगा, तो देखिए उम्मीद, होप इज नॉट ए स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी तो इंस्टीट्यूशनल चेक्स होते हैं. तो अब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हो गया कि क्वालिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी और उस रैंक का एक्सपीरियंस अफसर ही होगा. नाउ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहुंचने के लिए 100 लोग आए जब ज्वाइन करते हैं तो 35 साल बाद 32 साल बाद उसमें से मुश्किल से 5-7 ही सेक्रेटरी बनते हैं. उनकी ऑनेस्टी एस्टैब्लिश मानी जानी चाहिए, उनकी क्वालिटी, उनका एक्सपीरियंस वगैरह इतना अच्छा होता है कि वो एक से एक अच्छा है, सभी अच्छे हैं. तो ये इसको जो नैरो डाउन कर दिया वो ये अच्छी चीज है. दूसरे, अभी तक जैसे संजय जी ने कहा कि अब तक तो सरकार यूनिलैटरली किसी को भी लगाती थी, मैं भी उसी सिस्टम का बेनिफिशियरी हूँ. सरकार 70 साल से किसी को भी लगा सकती थी, और लेकिन ये बहुत गनीमत और खुशकिस्मती की बात है कि एक्सेप्ट और 1-2 नाम जो लिए गए, जो मैं नहीं रिपीट करूंगा लेकिन नाम जरूर लोगों ने लिए, तो उनके अलावा जो एक किस्म का एक क्वेश्चन मार्क बन गए. और जिस बात जब भी कभी हैविंग बीन इन इलेक्शन कमीशन फॉर 6 years, जब भी जरा सा भी किसी कोई उंगली उठाता है इलेक्शन कमीशन को, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पे किसी ने घूसा मारा. तो क्योंकि उसकी प्रेस्टीज, उसकी इस एडिफिस को बनाने में 2-3 ईंटें हमने भी लगाई थी, और हमें उसकी ये चिंता रहती है कि वो कि किसी भी इमारत को बनाने में 50 साल लगते हैं, और उसको हमने कितनी बार टीवी पे देखा है, डिमोलिश करने में 50 सेकंड लगते हैं. वो डिमोलिश के 1-2 हरकतें की, रेपुटेशन खत्म हो जाती है. तो रेपुटेशन को गार्ड करना जरूरी है, और उसके लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जो जजमेंट है, ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए ही की गई. इसमें
मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं ख्याल था, लेकिन ये प्रशांत भूषण जी उसको क्लैरिफाई कर देंगे कि मैंने जो समझा था अभी तक, लेकिन आई स्टैंड करेक्टेड कि कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था 70 साल पहले कि अब इसका अपॉइंटमेंट वगैरह का प्रोसीजर पे लॉ होना चाहिए, और जो 70 साल से नहीं हुआ था, तो अब इतने दिन क्यों नहीं हुआ, कोर्ट ने क्वेश्चन किया और आपने कहा कि लॉ बना दीजिए। लॉ ये भी हो सकता था कि सिंगल हैंडेडली एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे अपॉइंट करता ही रहेगा जैसे करता रहा है, लेकिन वेदर कोलिजियम, और कोलिजियम जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बनाया वो एक टेम्परेरी मेजर का, कि जब तक आप लॉ नहीं बनाते जब तक ये कोलिजियम काम करेगा। अब लेकिन वेदर लॉ में भी कोलिजियम लाना है कि नहीं लाना, वो प्रशांत भूषण जी ने एक्सप्लेन किया। एंड अगर ऐसे ही है कि उसमें था कि कोलिजियम लाना है, तो उस रिक्वायरमेंट को इलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा कर दिया। लेकिन अब इसकी खराबी पे मैं बाद में आऊंगा, आपकी खूबियां की मैं बात करूं। तीसरी चीज जो थी कि इसमें जो एक शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसीजर है, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा प्रोसीजर है, ये कई कंट्रीज में होता है कि भाई इतने लाखों लोग होते हैं, उनमें से आप 2 3 4 5 लोग शॉर्टलिस्ट कर दे कोई कमेटी, वो लेकिन वो क्रेडिबल और रेस्पेक्टेबल कमेटी होनी चाहिए, उसमें से चुन लीजिए। तो वो कॉन्सेप्चुअली अच्छा है, उसको प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा उस पर भी मैं आता हूँ। सबसे एक अच्छी चीज जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, और जिसके हम रिफॉर्म की डिमांड करते थे 20 साल से, कि रिमूवल प्रोसीजर जो था इलेक्शन कमिश्नर का बाकी तो वो अनइक्वल था, और वो बिल्कुल इलॉजिकल था, और किस वजह से था मुझे नहीं मालूम, केयरलेसनेस थी या क्या थी। कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रखने के लिए आर्टिकल 324 सेक्शन 5 में लिखा कि वंस अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर CEC कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट लाइक ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसी ने हाई कोर्ट भी जिक्र किया था, नॉट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, के लाइक ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्हिच मींस इंपीचमेंट प्रोसेस। तो एक तो ये कि जो इसे एक और डिबेट की तरफ मैं इसको लेके जाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस तो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया ही था एक कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिक प्रिंसिपल ले डाउन करता है, उसको एम्पलीफाई करते हैं बाकी के एक्ट। तो ये इक्विवेलेंस तो मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर दी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब इसमें जो ये था कि जिस वजह से मैं समझता हूँ कि रिमूवल को बराबर कर दिया गया, बाकी के दोनों अभी तक क्या होता था कि बड़े आसानी से उनको निकाला जा सकता था, निकाला भी गया एक सांप को, ठीक है, जो पुरानी बात भी नहीं हुई, अशोक लवासों को निकाल ही दिया। किसी एक स्टेज पे एक CEC ने किसी दूसरे इलेक्शन कमिश्नर को निकालने के लिए सरकार को पिटीशन भी भेज दिया था। तो मैं तजर्बे से बता रहा हूँ आपको कि होता क्या था कि CEC तो प्रोटेक्टेड है, उसको तो सरकार छू नहीं सकती, लेकिन बाकी दो तो बड़े वल्नरेबल होते थे। वो तो अपने को प्रोबेशन पे महसूस करते थे या कर सकते थे, वो हर बात अपने कंधे के ऊपर देखते थे कि भाई मैं काम जो कर रहा हूँ सरकार खुश है कि नहीं, मुझको एलिवेट करेगी कि नहीं करेगी। तो और वोट तीनों का, वोटिंग राइट तीनों का बराबर। तो ये दो इनसिक्योर लोग जो अपने को प्रोबेशन पे महसूस कर रहे हो, वो एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट माइंडेड CEC को रोजाना 10 बार ओवर रूल कर सकते थे। ये एक बहुत मेजर फ्लॉ था, इसको ये ठीक करने की जो कोशिश की गई है ये सराहनीय है। ये तो हो गई इसकी पॉजिटिव चीजें। अब हम डाउन साइड पे आते हैं। एक तो इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी जो बनाई गई है यानी कोलिजियम, उसकी वो तो बेसिकली प्राइमा फेसी डिफेक्टिव है कि वो तो 2 to 1 आज कंक्लूजन मतलब हम ले सकते हैं किस किस्म की अपॉइंटमेंट होगी। सरकार जो चाहेगी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो पहले भी जबकि चीफ जस्टिस तीसरे मेंबर होते थे, मुझे इनका अधीर रंजन चौधरी का बयान पढ़ना याद है अखबार में कि साहब किस बुरी तरह उनको ट्रीट किया जाता था। कहते थे मैं इंफॉर्मेशन मांगता हूँ मुझे नहीं दी जाती, मैं प्रोटेस्ट करता हूँ उसको ओवर रूल कर दिया जाता है। जब ये हालत थी तो आगे तो समझ लीजिए कि उनकी क्या वैल्यू रहेगी। तो ये कोलिजियम किस काम का कोलिजियम है, बिल्कुल ही नॉमिनल वो है, और इट डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ अ कोलिजियम।
इसलिए इसकी कॉम्पोजिशन चीफ जस्टिस आफ्टर ऑल बाकी के कॉलेजियम में चीफ जस्टिस होते ही हैं, तो इसमें से क्यों हटाए गए नहीं समझ में आता। तीसरा जो ये था कि इसकी जो मोर इम्पोर्टेंट की जो डाउन ग्रेडिंग की गई है कि फ्रॉम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। नाउ कैबिनेट सेक्रेटरी हायर सिविल सर्वेंट, लेकिन वो है तो ब्यूरोक्रेट। ना ब्यूरोक्रेट की वैल्यू, वो हिंदुस्तान ब्यूरोक्रेट को तो कैबिनेट सेक्रेटरी को भी हम सब लोग और पूरी जनता हिंदुस्तान बाबू कह के डिसमिस करता है, बाबू। तो अब एक बाबू को आप सीईसी अगर आप लगाएंगे तो आप उसको देखिए, उसकी जो डाउन ग्रेडिंग थी का फायदा जीरो, तो कुछ हजार रुपए बच जाएंगे सरकार के, लेकिन नुकसान क्या, दुनिया भर में जितने भी इलेक्शन कमीशन है कम से कम 50% कमीशन में जजेस उसके वहां के कमिश्नर्स हैं। वो हमसे सबक लेने आते हैं, सीखने आते हैं। 2011 में मैंने वहां पे एक इंस्टीट्यूट बनाया था इलेक्शन कमीशन में, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। मुझे बड़ी खुशी है आपको ये बताने में कि पिछले 10-11 साल में 108 देशों के लोग, हम टॉप मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन हमसे ट्रेनिंग लेके गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेके गए। अब वो चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट कंट्री से आके एक बाबू इलेक्शन कमिश्नर से डील करने में, दे मे नॉट से एनीथिंग, लेकिन उनके बिहेवियर में तो उसका असर पड़ेगा। इस डाउनग्रेडेशन से हमने क्या हासिल किया? इट इज शूटिंग आवरसेल्फ इन द फुट फॉर नो गुड रीजन, फॉर नो बेनिफिट। तो क्योंकि तनख्वाह कैबिनेट सेक्रेटरी की और सुप्रीम कोर्ट जज की एक ही है, पेंशन भी एक ही है, कुछ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जो सुप्रीम कोर्ट जजेस के हैं वो थोड़ा हमारे एक्स्ट्रा है, वो छिन जाएंगे, तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसकी जो डाउनग्रेडेशन थे, जो इसकी वैल्यू है। सेकेंडली, आप ये ना भूलिए कि इलेक्शन कमीशन किन लोगों से डील करता है। मेरे वक्त में लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड, जिसने हमारा अपॉइंटमेंट लेटर साइन करके इशू करना होता है नोटिफिकेशन, हमने उसको सेंश्योर किया था। उस सेंश्योर की किसी अदालत में अपील भी नहीं है, और ये जब हम सिर्फ इसीलिए कर पाए कि हमारा स्टेटस जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का था। अब एक ब्यूरोक्रेटिक इलेक्शन कमीशन मंत्रियों के खिलाफ डू यू थिंक एक्शन लेना उनके लिए आसान होगा? कर पाएंगे? तो ये एक गैर जरूरी चीज हो गई है। फाइनली मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि अब ये जो कोलिजियम, अगर ये फ्लॉड दो इट इज, अगर इसको रखा भी गया तो एक रिफॉर्म कर सकती है सरकार, जो सरकार के लिए 30 सेकंड का काम है कि ये कोलिजियम का डिसीजन को यूनानिमस कर दीजिए। और उसमें लोग इसके मुखालफिन ये कहेंगे कि यूनानिमस का मतलब तो ये हुआ कि आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वीटो पावर दे दी। नहीं, नॉट एट ऑल। और वो कैसे? क्या आपने शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी बनाई है, एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी जो 5 नाम इस सिलेक्शन कमेटी के सामने रखेगी। ये कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में है। वो कोई कैबिनेट सेक्रेटरी दूसरी तीसरी एक्सटेंशन पे ये कैबिनेट सेक्रेटरी है मिसाल के तौर पे, डू यू थिंक वो 5 आदमियों के नाम पर प्रधानमंत्री से अप्रूव कराए बिना सिलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे? यानी पांचों के पांचों लोग जो शॉर्टलिस्ट होके आएंगे उनको ऑलरेडी पीएम की सहमति होगी। तो अगर मैं डिसीजन मेकर होता तो मैं ये इन 5 को चुन के मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के सामने रख देता कि भाई इसमें से किसी पे भी उंगली रख दो, मैं उसको बना देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो पांचों बराबर हैं। मैंने तो उनको सब शॉर्टलिस्ट करके मेरी कमेटी ने इसको बना के रखा है, तो यूनानिमिटी की यूनानिमिटी हो जाती, और वो 5 के बियॉन्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो जा नहीं सकता। एक इस कमेटी में जो एक और खराबी है, ये जो शॉर्टलिस्टिंग कमेटी वाला जो क्लॉज है कि कमेटी बैठेगी, जब सैकड़ों सेक्रेटरी उनके नाम ढूंढ के 15-20 दिन में, और जो सिलेक्शन कमेटी है वो उन 5 के बियॉन्ड भी जा सकती है। तो व्हाट इज दिस? इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। फिर इस कमेटी का फायदा क्या हुआ? क्या आप बाहर से भी आप नाम लाते हैं तो फिर बाहर से ले आइए। कमेटी वाला ये फॉर्मेलिटी करने का क्या मतलब है? तो और इसका समाधान बता रहा हूँ, यूनानिमस कर दीजिए। आउट ऑफ दोस 5, ऑब्वियसली आउट ऑफ दोस 5 लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई ऐसे आदमी को नहीं ला पाएगा जो सरकार को एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि ये 5 जो सरकार के सिलेक्टेड हैं।
अच्छा, एक और भी इसमें जरा और फाइनल डिटेल में जाइए। कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 सेक्रेटरी जो इस शॉर्टलिस्टिंग कमेटी के मेंबर है, वो तीनों तो खुद भी कैंडिडेट हो सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर के, कमीशन बनने के। वो बेचारे वो तो फिर चूंकि खुद कमेटी है, अपना नाम तो वो रिकमेंड नहीं कर सकते। उन 3 बड़े अच्छे अफसरों को आप इसमें से एक्सक्लूड क्यों कराते हैं? तो इस कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलिए, मिनिस्टर के अंडर में कर दीजिए, फॉर्मर चीफ जस्टिस को ले आइए, किसी बिल्कुल आउटसाइडर्स की कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों तो खुद एलिजिबल है। और सेकेंडली दूसरे अपने जिन कोलीग को ये करेंगे, उनका एक जेलसी फैक्टर भी हो सकता है कि ये तो मुझसे बैच में मुझसे 4 साल जूनियर था, मेरे तो इसके एकेडमी में इससे ज्यादा नंबर आए थे, इसको क्यों चुनूं? तो इस किस्म का अपने पीयर को चुनने में जो एक प्रिजुडिस आता है, वो प्रिजुडिस भी उसमें शामिल होगा। तो इसलिए इस कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन को पे गौर करने की जरूरत है। फाइनली मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि हम जब इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, एक सुधार और होना चाहिए था कि अभी जो है कि इलेक्शन कमीशन के चुनाव चयन जैसे भी होगा, कोलेजियम करेगा या सरकार जैसे करती रही है, ये तो इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव सिलेक्शन कमेटी और के जरिए होना चाहिए। एलिवेशन टू सीईसी शुड बी ऑटोमेटिक बाय सीनियरिटी, ताकि ये इलेक्शन कमिश्नर ये महसूस न करे कि मैं एलिवेट हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। ये डाउट रहता है उसके माइंड में। चीफ जस्टिस को तो हमें पता है कि आज से 5वां 7वां चीफ जस्टिस कौन होगा, सीनियरिटी के बेसिस पे पहले से पता है, पिछले 30 साल से ये प्रैक्टिस चल रही है। तो इलेक्शन कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड बाय कोलेजियम, एलिवेशन टू सीईसी शुड बी ऑटोमेटिक बाय सीनियरिटी unless he has proved himself worthy of impeachment. तो ये एक रिफॉर्म था जो इसमें बिल्कुल मिस हो गया। आई होप जो अगर ये पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर होता है, वो इसको सुधारने की कोशिश करेगी। धन्यवाद। Thank you very much, Dr. Quraishi. And I think what you have given us is a very rounded perspective on the bill that is coming in this session of Parliament to be passed in the Lok Sabha. You started by, I'm going to give a very brief translation into English, because in the chat box also a lot of people have said that they are from South India and would like a brief translation. You talked about the salient features, the good points of this bill. One being that earlier there was no qualification, specific qualification that was laid down for the selection of an election commissioner, and anyone could have technically been made an election commissioner. Now, this bill basically very clearly lays out what is the qualification that somebody who is to become a chief election commissioner or an election commissioner must have. They must be or have been of the rank of a secretary to the government of India, and they must have experience in conducting elections in the country. So to you, this is a very important step, because it actually lays down the criteria in some senses, in a broad sense, but the qualification is laid down. The second thing that you said is that the shortlisting process that has been brought in through a search committee, which is now being brought in to through this bill, is conceptually a very good idea, because very often we know that when there is a selection committee which comprises of high-level officials, dignitaries, then they do not have the time to actually take the search high and low for the right people. And therefore, conceptually, having a search committee, which then gives a short list to the selection committee, is a good idea. Of course, you talked more about it and the problems related to it later, but conceptually, you said that that was a positive step. The removal procedure, which you said earlier was problematic, because although for the chief election commissioner, the removal of the CEC could only be in the same manner as the removal of a Supreme Court judge, but
For the election commissioners, the removal process was very different. It could be done on the recommendation of the chief election commissioner. So you are saying that the reform that is being brought in through this bill is a positive reform because it will give much more protection in many senses, and the changes that have been made to the removal procedure for the 2 election commissioners is a positive one. You, however, then went on to tell us what the problems with this bill are and which need to be perhaps debated and corrected in Parliament before a bill like this is passed. The first, of course, you said that the composition of the selection committee completely defeats the purpose of setting up the collegium for the selection of the election commissioners in the first place, because this 2:1 ratio basically means that whoever the government wants will become an election commissioner. The leader of opposition will be in a minority. The other problem that you have highlighted is the downgrading of the status of election commissioners from a judge of the Supreme Court to the level of a cabinet secretariat in terms of the salaries, the pensions, and the conditions of service. And for this, you have said that it was important that when election commissioners are censuring even ministers, law minister, prime minister also, if there is any violation of the code of conduct during elections, it is very important that they have, and they are seen to have, a very, very high position, which is really what was there in the 1991 Act, which is sought to be repealed in this particular bill. So the 1991 Act, which is applicable, basically said that all election commissioners and the chief election commissioner will have the same salary, pension, and conditions of service as that of the Supreme Court judge. But now, by equating it to a cabinet secretary, you said that it's really sort of diminishes in some senses the stature of the election commissioners, because for many people, they see bureaucrats as not quite at par with judges of the Supreme Court in terms of their stature. And also, it's not very clear why the government had to do this, because it's not as if by changing the equivalence of salary, etc., the government is ending up saving too much money of taxpayers. So it's not as if the salary per se is very different of a Supreme Court judge and that of the cabinet secretary. It really very much is a question of stature. And so you mentioned that it is not clear at all why this amendment had to be brought in, why that 1991 bill the law was not kind of integrated into this bill as it is. The other thing which you talked about was how some of the problems with the selection committee could be addressed. You said that the collegium's decision to select someone as an election commissioner could be made unanimously. So you basically suggested that the change that can be brought in the bill, the amendment that can be brought before it's passed, it's enacted, could say that these 3 people, the prime minister, the leader of opposition, and the cabinet minister, whoever is selected as the election commissioner should be done unanimously. And you're saying essentially that even the search committee that has been set up with the cabinet secretary and 2 other secretaries is not likely to be working very independently of the government of the day. So it's not really very possible that they will suggest 5 names out of which the collegium has to decide the election commissioners, which will not be vetted by, let's say, the prime minister. And therefore, according to you, it's very much a process of the prime minister and the union minister, in any case, agreeing with those 5 names already, and then asking the leader of opposition that who amongst that panel the leader of opposition would
feel is the most appropriate to be made the election commissioner or the chief. And that's how appointment should be made according to you. What you said is very regressive, is the fact that after making the search committee and giving them the task of searching for the 5 best people to recommend in a panel to the collegium, the bill goes on to say that the selection committee can go beyond the names that are suggested by the search committee. So that really nullifies the entire purpose of setting up a search committee in the first place. You also talking about the details, you said the cabinet secretary and the 2 secretaries who will be on the search committee themselves might be in the running for being considered as election commissioners, or they might want to be considered as election commissioners. So in a sense, they will be excluded from that process. One possibility, according to you, could have been to make a search committee from people outside the bureaucracy, but that's something that you talked about. And you also said that having people from the bureaucracy, like the cabinet secretary and the 2 secretaries, as has been envisaged in this bill, could also lead to some perception of prejudice, and because there might be colleagues with whom they might feel that we don't get along very well with this set of people, and therefore we are not being recommended, etc. You mentioned that one of the reforms that was required, which was not brought in, unfortunately, through this bill, is that the elevation of the elevation to the position of the chief election commissioner should have been by seniority. So the election commissioners, in a sense, should probably already know that who is going to become the chief election commissioner once the incumbent retires. And therefore, you felt that it would have been good that, like the Chief Justice of India, when all judges know who's going to be elevated to become the Chief Justice of India, similarly, it would have been useful if this reform had been brought in. So thank you so very much, Dr. Quraishi, for listing out all the positive aspects and also the challenges that this bill, the problems that this bill has, and how perhaps some of those could be addressed as well. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एमजी देवसहायम जी से, एमजी देवसहायम, former bureaucrat, IS officer, very senior bureaucrat who has been very actively looking at electoral reforms. The Citizens Commission on Elections that was set up under the chairmanship of Justice Lokur, you anchored that commission as well, Mr. Devasahayam, and there were many issues that came up in that report which came out of that commission. You have also edited those 2 reports which have come out, and we request you to talk about what are the kinds, how do we want the election commission to function, and in that context to kind of understand what kind of a bill should have been brought in. So I request you to please speak for the next 8 to 10 minutes. Thank you very much, Anjali. I would like to make one posture before I go into the details. Mr. Quraishi, my good friend and colleague, is here. I feel this selection committee should have no politicians at all, because election commission is a different cup of tea. It's not like any other kind of organization or association. He himself just said that they censured the law minister. And election commission has got not only the power to censure the prime minister, they can even disqualify the prime minister and remove him from the post of prime minister if he has violated some basic features of the electoral practice, which I don't want to go into. If that is the issue, election commission is not like any other institution. Not like information commission, not human rights commission, or whatever it is. So, like in many other countries, like at least in UK, I am little aware of, it has to be a totally independent body with jurists, judicial-minded people, and other people, experts, sitting there and electing. That is a preliminary point I want to make. I'll come back to that later. Why I am saying this is, as what Anjali has said,
What is our expectation from the Election Commission of India? What are they there for? Basically, they are the bulwark of India's democracy. And Election Commission is the institution which converts the will of the people into the form of government. They are the people who are the umpires who transform the will of the people. Will of the people is there. They go and exercise their mandate, and it has to be transformed into a structure, and then the government has to be sort of formed. That critical function of democracy is performed by the Election Commission. So it has to be as independent as possible of the political executive. If you read the proceedings of the Constituent Assembly, that is precisely what was discussed. He said the executive should have no role whatsoever. Leave alone the political executive, particularly, and unfortunately for the last 70 odd years, no law was passed. Now we are enacting a law giving complete control of the Election Commission to the political executive. This cannot be accepted. Number two, now I asked the question, what are you looking for from the Election Commission of India? We are looking at the Election Commission of India for conducting free and fair elections, where everybody's voice is accurately recorded and conveyed, and the government and the mandate is not stolen. I'm using the word, maybe a harsh word, but there have been cases, several countries in the world where mandates have been sold. And there also, we must have a system wherein the mandate should not be sort of stolen by any agency or force. So there has been certain areas where Election Commission has to play a very vital role. Number one is the inclusiveness and the integrity of the electoral roll. Of late, there has been serious doubts whether the electoral roll are inclusive, whether there have been arbitrary exclusion and removal and cancellation of people belonging to vulnerable communities, minority communities, disadvantaged communities. The report recently of the Ashoka University, that scholar has made a detailed study. I read the report, but he made a detailed study, though of course limited in scope. And he has dealt with only the tampering of the electoral rolls. Based on it, he has come to the conclusion the 2019 parliament election was tampered with. It was manipulated. Though he has identified only about 12 or 13 constituencies where there has been close contest, but the fact remains, a detailed study with a small sample survey by the Ashoka University has established that in closely contested constituencies, manipulation has taken place. This is a very serious matter. So I live in Bangalore. Recently, I happened to come look at this electoral roll issue of Karnataka. There have been large-scale cancellations, deletions, arbitrary, violative of the directions issued by the Election Commission of India, and going on. And you find people, and then the 2019 election, I was in my own home constituency in Kanyakumari. Overnight, 40,000 Christian votes were removed. We made a lot of noise, and I talked to the chief electoral officer, very bright young boy. He conceded, immediately ordered an inquiry through the district collector, and then called me himself and said, "Sir, it's not 40,000, sir. It is about 10, 12,000. I said, damn it, that is also a big number. So the fact is, electoral roll integrity is the most important function of the Election Commission. For that, Election Commission has got the support and active listing of all the district collectors in the country. Every district collector is the district election officer, and he is in charge of the registration officer also. So it is the responsibility of the Election Commission to see that. That is number one. Number two, how do the election is recorded? The voting procedure. Earlier it was with the paper ballot, and then we have shifted to last 20 years or so to the EVM, and the last 2019
all the EVMs have been attached with VVPAT, voter verifiable paper trail. But basic fundamental reason was only EVM voter is not been able to verify. The basic concept of free and fair election is the voter is a sovereign. Voter is a sovereign and he is transferring his sovereignty for 5 years. And so sovereign has every right to know whether his vote was recorded as cast, cast as intended, recorded as cast, and counted as recorded. 3 fundamental principles of verification, democracy principles. But in EVM, it is not happening. You just press a button, just hear a noise, see a light, and you really do not know. Then VVPAT was brought in to verify. In fact, it was brought in during the tenure of Mr. Quraishi, when he was Chief Election Commissioner. He has made elaborate discussions. Political parties came in and then discussion took place. But now when we have reviewed the functioning of the VVPAT, it has been considered, it has been converted into a bioscope. Like the school children are shown, oh, dekho, aage dekh liya hai. 7 seconds, you see something, a slip hanging, and is falling somewhere and vanishes. Nothing is heard of. It's not counted at all till the elections are declared. Not declared means may not be, a returning officer might not have signed, but elections would have been completed, results would have been virtually announced, people have celebrated, but this slip that the voter saw, supposed to verify, is not counted. It's an extremely serious matter, which violates the basic concept of free and fair election. Third point is, of course, the criminal and money power. To what extent Election Commission has been able to curtail that? And actually, Supreme Court has come out with judgments. And even if after the judgments, we find money power playing havoc, and this electoral bond is being brought in a very surreptitious manner. And unfortunately, Supreme Court has not been able to look into this matter, wherein massive amount of money is passing to the ruling party, and in return, favors are being given. Nobody knows what is going to happen. The money is playing havoc. Not only the electoral bonds, the kind of money. In fact, a study done by one of the sort of think tanks in Delhi, I think Mr. Sanjay's think tank, I don't know who, I am not exactly sure. They talked about the 62 or 65,000 crores were spent in 2019 elections. Coming to an average, the ruling party is spending about 30 crores. 30 crores per constituency, something that's the kind of expenditure taking place these days. So that is third part. Fourth is, of course, as mentioned in detail, enforcement of the model code of conduct. It has been highly erratic, always in favor of the ruling party. So cumulative, see, precisely for the reason mentioned by Mr. Quraishi, India's Election Commission enjoys a very high reputation, not only nationally within the country and outside the country also. Now the question, to what extent this bill, because the subject is the bill, if it passes into law, can facilitate the Election Commission maintain this reputation, improve upon this reputation, and also deliver free and fair election to the people of India. Absolutely, I think the chances are absolutely nil. And the points already have been dealt with by Mr. Quraishi. One is, as I mentioned originally, all the three are politicians. The Election Commission is a commission meant to rein in the politicians. During the elections, even after the elections, defections take place. Even after defection takes place, it goes to the Election Commission. Violation of moral code of conduct goes to the Election Commission. Then doing mischief in the account, that is the return they have to file on the expenditure. If it is proven that they have filed a false affidavit or false expenditure return, they can be disqualified. And then the Symbols Act gives the powers for the Election Commission to even suspend the
the political parties, the symbol. See, like Hanuman, the Election Commission does not know its powers. Now, you gave a certain status of the Supreme Court judges, good, and they have been, that status has helped a lot. Now we are bringing it down to cabinet secretary, making it to a bureaucracy. Of course, yes, you are keeping that particular checks and balance. Now you are given that coverage protection to the election commissioners also. How much time takes for the government to remove that also? Now that you have downgraded, earlier you can always argue, this protection was given because they had the status of the Supreme Court. So we wanted to give them the same kind of protection. Cabinet Secretary does not have that protection. As step one, you have already brought them down to the level of the Cabinet Secretary. Tomorrow, you can easily remove the protection at all. So that is it. So you have completely exposed the Election Commission to all whims and fancies of the ruling party. So the point I was trying to make is, people have a lot of expectations. The voter has got a lot of expectations. And voter, as you know, is a sovereign. Government is not the sovereign. President is not the sovereign. Prime Minister is not the sovereign. Citizen is the sovereign. And it is the responsibility of the Election Commission to transform the wish, the mandate, the will of the people as the instrument of government. An institution playing such an important role, you are just talking as if, and then say again the same point which Mr. Quraishi mentioned. I was talking to Anjali in the morning when she called me about this search committee and selection committee. It's a farce being played. Selection committee, you provide for a search committee in section 5, and in section 8, you say the selection committee can adopt its own procedures and pick up anybody they want. Then I gave an example also. She was completely stunned and surprised. So they don't have to stick to the selection committee, search committee's report at all. So what I'm trying to say is that this bill is highly flawed, and it is against the discussions and what Constituent Assembly has originally brought into the Constitution of India as Article 324, and also it's violative of the Supreme Court judgment. In fact, I read the statement by Justice Madan Lokur, who clearly says the Supreme Court judgment reflect the letter and spirit of the Constitution and the discussion of the Constituent Assembly. In fact, Mr. Devasahayam, we have Justice Lokur has joined us. So when you have, I'll be happy. I'm closing it now. I'll be happy that if we can intervene for a few minutes and tell us about the. I wanted to request Justice Lokur, if you can hear us, if you would like to speak for a few minutes, and I'm just completing it. Welcome. So Yes. I want to sum up. I'm very glad that Justice Lokur is here. He chaired the Citizens Committee Commission on Elections. And this is not the way a law is enacted in a democracy. The question is, are we a democracy at all? Constituent Assembly discusses something, you put something in the Constitution of India, then after 70 long years, it comes before the Supreme Court. Supreme Court comes out with a detailed judgment, and you bill in a bill which is totally violative of the spirit of the Constitution and also the judgment of the Supreme Court. This is not done. I think, in my view, even the ruling party MPs must object to this, because it compromises their position also. At the end of the day, they are the representative of the people. If they don't represent the people, their existence is meaningless. Thank you very much. Thank you, Mr. Devasahayam. आपने बहुत सारी important चीजें बताई हमें. मैं इसका संक्षिप्त में हिंदी में ट्रांसलेशन जरूर करूंगी, पर पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, अगर जस्टिस लोकुर
हमें Justice Lokur is saying he's going through security, so perhaps he'll join us after that. Yeah. All right. So बहुत संक्षिप्त में मैं हिंदी में बताना चाह रही थी कि मिस्टर देवसायम ने क्या मुद्दे रखे। आपने बेसिकली बताया कि हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना जो काम है वो निष्पक्ष तरीके से करे, जिससे हमारा लोकतंत्र एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में कायम रहे। और आपने कहा कि जो निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो किसी और बॉडी के साथ इजीली कंपेरेबल नहीं है। उसकी तो निष्पक्षता और उसकी स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा निर्वाचन आयोग किसी भी पार्टी के तहत होगा या सरकार के कंट्रोल में होगा तो फिर चुनावों का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। और अगर कोई पार्टी ही इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर लेगी तो लोकतंत्र में चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा। और आपने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स भी जो हुई संविधान बनने के समय पर, उसमें भी इसके ऊपर बहुत चर्चा भी हुई और स्वतंत्रता जो है निर्वाचन आयोग की, उसे बहुत मान्यता और इम्पोर्टेंस दी गई। आपने हमें ये बताया कि इलेक्शन कमीशन से हम लोगों की, देश में जो नागरिक हैं, जो वोट डालते हैं, जो रहते हैं लोकतंत्र में, उनकी बहुत अपेक्षाएं हैं। और क्या अपेक्षाएं हैं, उसमें से बहुत जरूरी है कि वो सही से चुनाव कराएं। ये नहीं हो कि मैंडेट स्टील हो, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि चुनाव कैसे हो वो निष्पक्ष रूप से उनका चुनावों का रिजल्ट ना आए, जिन्हें जीतना चाहिए, जिन्हें वोट मिले हैं वो ना जीते, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला तो यही अपेक्षा है सबसे बड़ी। दूसरा ये है कि वोट करने के लिए कौन एलिजिबल है, वोटर लिस्ट में किनका नाम है। तो वोटर लिस्ट की सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन काम करे। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये काम दिया गया है इलेक्शन कमीशन को। और आपने कहा कि जिस तरीके से रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं, जगह जगह से आ रही हैं कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उन्हीं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। कई कम्युनिटीज हैं, कहीं पर मुस्लिम समुदाय, कहीं पर दलित समुदाय, कहीं पर क्रिश्चियन समुदाय, जहाँ के लोगों के नाम काट दिए जाते हैं आर्बिट्ररी तरीके से। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि ये तो चुनाव को सही से चुनाव होगा ही नहीं अगर इलेक्टोरल रोल्स सही से नहीं बनेंगे। और ये काम है इलेक्शन कमीशन का कि किसी भी तरह का गलत एडिशन या डिलीशन जो इलेक्टोरल रोल्स में है उसमें नहीं हो। आपने ये भी कहा कि बहुत सारी जो डिमांड्स हैं इलेक्शन कमीशन से, उनकी चर्चा की आपने, बल्कि एक पिटिशन भी है जो कि लोगों की तरफ से निर्वाचन आयोग के लिए लोग साइन कर रहे हैं, हजारों लोग देश में अभी भी। और उसमें लोग कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वीवीपैट और ईवीएम के थ्रू जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सही से हों और डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स के मुताबिक हो, और वीवीपैट में सही तरीके से 100% काउंटिंग हो इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस करने से पहले। ये काम इलेक्शन कमीशन करवा सकती है। जो क्रिमिनल और मनी पावर है हमारे जो चुनावों में आज दिखाई देती है, हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को बोलना बहुत जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना स्टैंड ही चेंज कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पहले कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी फंडिंग इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल गलत है, और फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है, और हम चाहते हैं, ये जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम सही से करे, जिससे कि जो इलेक्शन है वो निष्पक्ष रूप से लेवल प्लेइंग ग्राउंड से हो सके। जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जिसकी चर्चा पहले भी की गई, उसकी इन्फोर्समेंट कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम ही है। उसके बगैर चुनाव सही से कैसे हो सकते हैं, तो वो भी काम है इलेक्शन कमीशन का कि वो जहां पर भी वायलेशंस हो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, उस पर निष्पक्ष तरीके से काम करे और एक्शन ले। ये बहुत जरूरी है। तो आपने कहा कि हमारे देश में आप बिल्कुल सहमत हैं डॉक्टर कुरैशी के साथ में कि हमारे
हमारे देश में इलेक्शन कमीशन की जो रेप्यूटेशन है वो बहुत ही बढ़िया रही है, और जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन अपनी इस रेप्यूटेशन को मेंटेन करें। देश में लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन सही से काम करे, जिससे कि चुनाव सही से हो सके। और आपको ये लगता है कि जो बिल आ रहा है इस मौजूदा सिचुएशन में, जिस तरीके से बिल आ रहा है, और उसमें आपने जो सभी स्पीकर्स ने अभी तक बातें उठाई उसके ऊपर आपने सहमति भी दर्ज करी कि ये जो बिल आ रहा है ये तो हमारे इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से काम करना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, उसके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं होगा इस बिल का। और ये बिल इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए। बहुत जरूरी है कि इस बिल के ऊपर डिस्कशन, डिबेट हो पार्लियामेंट में, और चेंजेस हो, अमेंडमेंट्स हो इसको पास होने से पहले। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर देवसहायम। एंड मैं फिर पूछना चाहूंगी जस्टिस लोकुर, अगर आप अभी अपनी बात रख सकते हैं तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज give your comments, share your comments with us, if you're able to unmute right now. Yes. Yeah. Welcome, Thank Justice. you, Anjali. I will just be short and brief because of the interruption at the airport. There are just two things that I would like to say. First is that, the Constituent Assembly, when they debated the constitution of the Election Commission, there was no agreement on how to constitute the Election Commission. But one thing that everybody was very clear about, and I think that was the unanimous view, that the executive should have nothing to do with the appointment of the Election Commission or the functioning of the Election Commission. I think there was no dispute at all. But it appears to me that, perhaps because there was no agreement possible, it seems that they said, all right, let law be passed in due course of time when all this can be debated. But again, on the understanding that the executive would have nothing to do with the appointment of the Election Commission. That is something that I think needs to be kept in mind, because that was the view of the Constituent Assembly. One of the members of the Constituent Assembly, Professor Shibanlal Saxena, he came out with an interesting proposal, which was not rejected by Dr. Ambedkar. But like I said, the discussion was intended to be postponed for the enactment of a law. Now, what Professor Shibanlal Saxena suggested was that the Election Commission should be appointed by a 2/3 majority of Parliament. That would ensure the independence, because 2/3 majority is not easy to get. And if 2/3 majority is there, then the person should be appointed as the election commissioner or the chief election commissioner, as the case may be. Dr. Ambedkar felt that this would be a cumbersome process. Yes, it would be a cumbersome process only if the election commissioner or the chief election commissioner demits office, or there is some unfortunate event that occurs. Otherwise, the matter can be taken up when a regular parliament session is being held, because the appointment of the election commission is for 6 years. So really, I don't see any difficulty. But this, like I said, it had to be debated, and that debate was intended to be postponed. That is one thing. The second thing that I would like to say quickly is that this is on a different context, but it's on a much broader scale, that there are provisions in the Constitution about the law being made for the Supreme Court, the functioning of the Supreme Court. Now, I can't imagine, if Parliament makes a law that this is how the Supreme Court, according to us, should function, like they're doing for the Election Commission or the appointment of election commissioners. Parliament can always make a law and say that, listen, this is the way we think Supreme Court should function. What happens to the independence of the judiciary at that point of time? Can Parliament by law say that, listen, we think that this category of cases should be taken up first and some other category of cases should be taken up later? How is the
Supreme Court going to function? So it's not only the fear that people have that the Election Commission can be manipulated through this legislation. There is a possibility that even the functioning of the Supreme Court can be interfered with. I think that is an area that we should also consider very, very seriously, because the passage of the bill can have long-term implications even on the functioning of the Supreme Court. These are the only two things that I would like to say. Thank you very much. It's been a little rushed, and I frankly have not been able to hear everybody except in bits and pieces. But all the best to all of you. Thank you. Thank you very much for joining us, Justice Lokur. You're traveling, and we were very keen to have you join us. And I'm glad that you could connect and you could share your thoughts with us. Very, very important thoughts. मैं बहुत संक्षिप्त में जो जस्टिस लोकुर ने बात कही वो बता देती हूँ हिंदी में भी. जस्टिस लोकुर ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब डिबेट्स हो रही थी, जब संविधान बन रहा था बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में, तब ये बात बहुत डिटेल में हुई कि कैसे इलेक्शन कमीशन चलना चाहिए, कैसे चयन होना चाहिए है निर्वाचन आयोग में जो आयुक्त हैं उनका. और एक चीज जिसके ऊपर सबकी सहमति थी वो ये थी कि किसी भी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के चयन, कमिश्नर्स के चयन में या इलेक्शन कमीशन के चलाने में. तो बहुत जरूरी है किसी भी लोकतंत्र में कि जो निर्वाचन आयोग है, जिसका काम है कि वो एक तरीके से रेफरी का काम करें, सही से चुनाव कराएं, देश में फ्री और फेयर इलेक्शन कराएं, किसी पार्टी विशेष के तहत या कंट्रोल में ना हो और निष्पक्ष रूप से काम करें. तो ये चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कशंस में, डिबेट्स में बहुत उभर कर आई थी और ये क्लियर प्रिंसिपल के ऊपर एग्रीमेंट थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल हो. लेकिन क्योंकि ये सोचा गया कि पार्लियामेंट, संसद ही तय करेगी फाइनली कि ये कैसे चयन होना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो क्लियर था. और जस्टिस लोकुर ने कहा कि अभी जो हम बिल को देख रहे हैं और जो सारी बातें अभी पैनलिस्ट्स ने कही भी, वो यही दिखा रही है कि ये प्रिंसिपल जो है ये वायलेट हो रहा है. जिस तरीके का कोलिजियम बनाया जा रहा है, जिसको प्रपोज किया जा रहा है इस बिल में, तो ये जो प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मान्यता दी गई थी और यूनानिमसली एग्री किया गया था, वो इसमें वायलेट हो रहा है. उन्होंने बताया कि प्रोफेसर सक्सेना थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने ये सजेस्ट किया, सुझाव दिया, और B.R. अम्बेडकर जी ने भी इस सजेशन के वो साथ थे कि इलेक्शन कमीशन की जो चयन है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और मुख्य चुनाव आयुक्त का और चुनाव आयुक्तों का, वो 2/3 मेजॉरिटी, मतलब एक पार्लियामेंट में, सदन में ये होना चाहिए. और वो ऐसे ही नहीं कि कुछ मेजॉरिटी हो तो हो जाए, 2/3 मेजॉरिटी के साथ उनका चयन होना चाहिए. ये थोड़ा जटिल सा थोड़ा हो सकता है, कम्बरसम हो सकता है, थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन बहुत जरूरी है. तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की कुछ बात सोची जा सकती है अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष हो और उसमें किसी भी एक पार्टी का, विशेष का या एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल नहीं हो. वो पॉसिबिलिटी उन्होंने जाहिर करी. दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो बिल आ रहा है, जिसे कानून बनाया जा रहा है, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग के लिए, चुनाव आयोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कानून बनाकर तय किया जा सकता है कि कैसे नियुक्तियां होंगी इलेक्शन कमिश्नर्स की, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में. उसी तरह से संविधान में ये भी लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा उसके ऊपर भी जो कानून बनाया जा सकता है. तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कानून आ रहा है
तो फिर तो हमें ये भी सोचना होगा कि अगर इस तरह का कानून, इस तरीके की सोच का कानून लाया जा रहा है आज इलेक्शन कमीशन के लिए, तो कल क्या सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के लिए भी ऐसा कानून तो नहीं लाया जाएगा। तो ये एक बड़ा जो डेंजर है, डर है, उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में एकदम अब हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जब इस्तेमाल होती हैं इस तरीके की प्रावधान और कहा जाता है हम कानून ला रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अगर वो इस तरीके से लाए जाएं कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको वो कमजोर बना दें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की फंक्शनिंग को कमजोर भी किया जा सकता है। ये भी आज एक डर बन सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस लोकुर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड वी हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. I'll just read them out, and Dr. Quraishi, if you could respond to some of those, and also then we will request MG Devasahayam ji to respond. One question is that, is it possible at all to thwart this bill at this stage? Is it possible कि कुछ इस बिल में बदलाव, जैसे कि आपने जो concerns जताए, उसमें आ सकें अभी? दूसरा सवाल है, मैं इकट्ठे पढ़ देती हूँ कुछ सवाल जिससे कि आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। जब why the statute is being equated with the pay and not by the way of removing, which has been made same to the removal of Supreme Court judges. I think the question is that the stature is being equated with the pay and not by way of removing, which has been made the same. So I think they're saying that why has the salary been now equated to cabinet secretary, whereas the process of removal continues for the CEC to be as the same as that of a Supreme Court judge. The other question is that there are anxieties around announcement of dates of major elections and no parity in punishment on violation of Model Code of Conduct. Can someone please lay down the impact of such departures of Election Commission on fairness of elections? Then finally, should the selection of CEC be done by a committee of top 3 to 5 party representatives? In any case, should the appointment of CEC not be subjected to public confirmation like in the US? This has the benefit of exposing all aspects of individuals and a thorough investigation. Having done that, it can be an independent institution. So different, a whole host of questions that are being posed. If the CJI is involved in the appointment of Election Commission, in the event of a judicial case against the appointment, there could be a conflict of interest. Is that possible? So is that something you'd like to address? And there is one question on, will the Aadhaar Breach and Data Protection Act affect the upcoming elections? That is also a question that is being asked. And finally, one question to Dr. Quraishi on how you are seeing the removal of the election commissioners now being done differently than before. So these are the list of questions. I've read them out to you. If each of you could take some time, 5 minutes. I know. Lots of questions, and but I'll be very, very brief. First of all, how to thwart the bill. First of all, there should be a pressure on the government and parliament to refer it to a select committee of parliament, which you can discuss in detail, because it consists of all party members, and that will be a good opportunity, good occasion, where the pros and cons of the bill could be discussed and the defects can be modified. Then pay and removal, you are right, it's a bit of a contradiction that while the CEC and others are being downgraded to the rank of cabinet secretary, but actually the joint secretary's, cabinet secretary's pay is already that of the Supreme Court judge. Pay disparity does not exist. Oh, that's not the point. It is basically the stature, the rank, the equivalence, which is mentioned in the Act of 1993. By the way, you had mentioned 1991 Act repeatedly. 1991 Act was also defective. It says that CEC will be the rank of Supreme Court judge
the other two will be of the rank of a High Court judge. And it was corrected in 1993. All three were made equivalent in every possible way, which is the right thing to do, and which is the law which still exists. Now, model code, in implementation, disparity and others, and dates, of course, the model code actually is not as toothless as the people make it out to be. But at the same time, the way Election Commission conducts itself in the taking action under the model code with equality. Questions were raised when some very important people were let off with very serious allegations. In fact, in one case, when for 25 days no action was taken, and Supreme Court had to come down heavily on the Election Commission, which normally doesn't. You never used to, because Supreme Court also respected the Election Commission once upon a time. They said, how the hell can you sit on this for 25 days? Why are you not taking decisions? Hurriedly, in one day, decisions were taken, giving all clear. So that is a question mark, which will go down in history as a black mark, without doubt, without hesitation. Now, the dates are actually fixed by the Election Commission, and it is the exclusive power of the Election Commission to fix the date. Of course, the Election Commission discusses these dates, possible date, with all the political parties, including the ruling party, and also with the Home Ministry for the security consideration, but taking into account everybody's concerns and wish list and everything. Finally, it is the Election Commission which decides the date, and perhaps in many cases, at least till our time, government was the last people to know what are the dates in our mind. Then party to appoint. That is an interesting suggestion, because in neighboring Nepal, all decisions are taken by political parties, and there are opposition parties, and in fact, even the posts are divided. The two posts will go to X party, Y party, Z party, and as a result, it's a mix of selection from different parties. They come up with a very workable relationship, but I don't think we need to go that route at all. If we can find something as discussed during this interaction, that there are enough jurists, there are many high quality Supreme Court Chief Justices who retired. Justice Venkatachala is still alive. If people like them can be involved, and this is a good suggestion by Mr. Devasahayam that it should be totally non-political. If the idea is to keep it from the executive, as pointed out by Justice Lokur in the Constituent Assembly, that it has to be totally outside the executive. Now, one thing about Chief Justice and the conflict of interest, I also mentioned in one or two articles, but although it sounds like contradiction, I've been propagating that there should be a collegium like we have in for other things, which consists of CJI. But there is a possibility that here the Chief Justice is a party to the appointment, and that appointment gets challenged in the Supreme Court. Then in Supreme Court, he sits in judgment on that appointment. And another thing which puts a question mark here, that one director of CBI, which was appointed by a collegium with a Chief Justice in it, and he brought disgrace to this the post when a criminal went to his house 190 times in 1 year. So, and nothing happened to him even after that, which is unfortunate, which puts a question mark on the quality of our collegium's decision making. So, but then I would take it as an aberration. But otherwise, the fact that nobody has ever questioned the appointment of a CVC after the collegium has been constituted, of the CIC, nobody has questioned. And with this kind of collegium, which we already have, even the leader of opposition parties cannot object, because when they know that your leader of opposition was a party to the decision, then the opposition parties will have no moral right to question the incumbent, because they were party to the decision. Aadhaar, I'm still not very, very clear, although when Aadhaar began, we were already there. We wanted Aadhaar only to find the duplicate voters, which was a very cumbersome thing. But now that lots of things are being mentioned, how Aadhaar can
the compromise, the fairness of election and others. Still, there are various questions. My answer, as I know and admit it is a limited knowledge, that as far as we viewed Aadhaar, it was only to check the electoral rolls. And electoral roll has no secret information. My name, my age, my address, and my father's name. That is all it has. It is in the public domain. It is available in PDF form. And through this, if we can identify duplicate voters, that is fine. Who I vote for, the voting is not connected with Aadhaar at all. But if computer can do a whole lot of mischief, I don't know. In fact, I talked to Mr. Nilekani a couple of months ago. That you were in charge of it, and in fact, he had come to see me when he was just starting his job. I think, please tell us, is there some catch? So he's a technical man and I'm illiterate. So he did give me some answer, which left me uncomfortable because he did not say unequivocally, no, don't worry. No problem, I guarantee. Well, I have been guaranteeing EVM's integrity, for instance. I expected that kind of confident reply from him, but he said something which I could not really understand. So maybe somebody can get the answer out of him. No, I could not. Removal process, we have already discussed at length. Therefore, I don't think I need to spend time on that. Thank you. Thank you, Dr. Quraishi. Mr. Devasahayam, you want to briefly I'll respond to a couple of points. One is the last point, which it was inconclusive, what Mr. Quraishi. This Aadhaar, linkage of Aadhaar with voter ID is a very, very sort of complicated issue. I have written on the subject and the experts have also written on the subject. There are two major disadvantages of linkage with Aadhaar. Aadhaar itself is not a completely dependable document. It's very porous. The way it is prepared, you can, any private agency, they have a contract and they just manufacture Aadhaar cards. It is proven again and again and again that Aadhaar cards have been misused and it is subject to severe fraud. That's when Nilekani has not been able to give a assurance to Mr. Quraishi. Second most important point we are trying to make is the voter ID, they call it EPIC. EPIC is prepared by the Election Commission under its jurisdiction through a very rigorous process. They go to the home-to-home visit, check up, verify, and it's a document prepared by the Election Commission and issued by the Election Commission, which is an autonomous body, which is responsible for conducting the election and elect these leaders into government, prime minister or whatever it is. Whereas Aadhaar is a document prepared by a government agency. Actually, an agency to which it has been outsourced. How can an agency outsourced by the government's document supersede? The moment you link to each other, virtually Aadhaar virtually supersedes, because Aadhaar is your base for verifying your voter document. Voter ID can be rejected, thrown out, cancelled. Now, this is one area which the same argument a couple of months ago, it happened in Pakistan and it happened in Bangladesh also. And both these neighbors outright rejected this Aadhaar type. It will completely compromise the authority of the Election Commission of India and the document prepared by the Election Commission of India. So besides the technical points, there are a number of other technical points. I don't want to go into that. Basically, Aadhaar has no business to be mixed up. It was a mistake on the part of the Election Commission of India to concede to this and surrender to the executive authority. Actually, it was a directive issued by the PMO, which was complied with by the Election Commission of India, which is a very wrong thing to do. Now they have enacted the law and they say it is not compulsory. It is voluntary. But what voluntary? We have seen it. Linking of Aadhaar with bank, we have seen. In fact, I challenged it in the Supreme Court along with some colleagues, and eventually Supreme Court struck down linkage of Aadhaar with bank is unconstitutional.
They rejected the linkage, but they rejected only for welfare activities. It can be linked to Aadhaar. Bank account cannot be linked to Aadhaar. Telephones cannot be linked to Aadhaar. But by the time the Supreme Court judgment came, 95% Aadhaars have been linked to the bank account through terror. Because banks used to spread terror. We'll cancel your account. We'll freeze your account. Same strategy is taking place now. Officials are going and threatening. If you don't link it with Aadhaar, we'll delete your list, remove your list from the voter list. This kind of thuggery is going on. So the very fact that Aadhaar is being brought in as an additional document is not good in practice, and the Election Commission should not have succumbed to this, and Election Commission has considerably surrendered their autonomy. That's the point about I want to make about Aadhaar. Coming to the other point about pay scale, status. See, the question is, this is step number one. See, Mr. Quraishi and others have been repeatedly saying you have to give certain protection to the Election Commission, the Election Commissioners, because they are going and performing a very onerous task. Actually, Election Commission has very vast powers. They have legal powers under the Representation of People's Act and other laws enacted. They have Supreme Court's judgments giving them certain powers, and they have plenipotentiary powers under Article 324. In the interest of free and fair elections, they can take decisions on their vote. And they can take a decision, as I mentioned earlier, which can even remove the Prime Minister from his office. That's the kind of awesome powers they have. So when you are dealing with such an organization, unfortunately, it was left incomplete in the Constituent Assembly. They should have brought it into the Constitution itself, like they brought in IAS and IPS in Article 312 of the Constitution. They should have brought it into the Constitution itself, but left it to the Parliament. And Parliament never acted. Now when the Parliament is acting, they're acting totally in a negative manner. So the question is, under the Symbols Act, I don't know whether Quraishi remembers whether the amendment was, no, it was done much before that. Under 16A, when there is a violation of moral code of conduct, Election Commission can issue notice to the party and suspend the registration of the party, and also even withdraw the symbol. Suspend the registration, leave alone. They can withdraw the symbol. The moment symbol is withdrawn, the election is finished. Do you think that party will ever win the election? Nobody knows the candidate. Everyone is only looking at the symbol. So, see, Election Commission, as I said earlier, is a peculiar organization. It's a bulwark of democracy. It's a watchdog on the politicians. That's why I said the selection process of Election Commission should have nothing to do with political executive at all. Administrative executive maybe, to some extent. So my suggestion would be a selection committee would be a 5-member selection committee. All right, we bring in a senior functionary, the Vice President of India. Maybe he might have been elected through party, doesn't matter, but he's Vice President of India. He's supposed to be outside. Prime Minister is 100% party man. 100% party man. President, Vice President at least is above in rank to the Prime Minister. The chair should be the Vice President. I am not in favor of any present Chief Justice. No, that the conflict will take place. When selection takes place, it is challenged the Supreme Court. So former Chief Justices are there. Former Chief Election Commissioners are there. So 5-member committee of a political committee should be the one to select through a process. Then there will have some confidence. This present system will have no confidence whatsoever, and situation will become bad, from bad to worse, and it's not a correct thing to do. As far as tallying is concerned, Quraishi is right. We should make a move to what. Anyway, they have done it only testing the waters. They have introduced only in the Rajya Sabha. It's yet to go to the Lok Sabha. They are testing the waters. At least we can make a move that they must refer it to the select committee in turn, parliamentary committee go for a widespread discussion among the public, and draw down the constitution and come to an appropriate decision.
That's what I would like to respond. Thank you, Mr. Devasahayam. I think there are some people who would like to speak, but apologies, we are running short of time. मेरे ख्याल से बहुत ही rich discussion रहा, बहुत सारी चीजें कवर हुई आज डिस्कशन में. एक जो मुद्दा अभी आया था कि क्या डेटा प्रोटेक्शन बिल से क्या हो सकता है, वो एक डर जरूर है कि क्योंकि हमारी वोटर लिस्ट में नाम, पता और फोटोग्राफ लगाई जाती है, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरीके का डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी पास हुआ है, सरकार लेके आई और पार्लियामेंट ने पास कर दिया, कि इलेक्शन कमीशन जिन्होंने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, सर्चेबल डेटाबेस होता था वोटर्स का, उसको बदल के अब जेपैग लगा दी गए हैं, फोटोज लगा दी गई हैं जो सर्च नहीं की जा सकती हैं. तो ये एक डर है डेटा प्रोटेक्शन बिल आने से कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा एक्सेस जो है, जो इंफॉर्मेशन को है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमारी है, कि वोटर्स कौन है, वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल लिस्ट की जो एक्सेस एज सिटीजन्स वी हैव टुडे, that must not go under the pretext of data protection. I think that's very important. And मुझे लगता है कि जो बातें अभी हुई, कि अभी समय है, ये बहुत चिंता की बात है कि किस तरीके से हमारे लोकतंत्र में संसद काम कर रहा है, पार्लियामेंट काम कर रहा है, और किस तरीके से बिल्स आ रहे हैं और फटाफट उन्हें पास कर दिया जाता है. स्पेशल सेशन बुलाने का क्या मकसद था? बहुत देर तक तो एजेंडा बताया नहीं गया. लोकतंत्र में आप कानून बनाने जा रहे हैं, लोगों को बता ही नहीं रहे कि क्या कानून लाए जाएंगे, कि इनके ऊपर जिनको इनेक्ट किया जाएगा. और बहुत जरूरी है कि इस तरीके के कानून पर जो ये लाया जा रहा है, इस पर चर्चा हो. और जैसा कहा गया, जैसे डॉक्टर कुरैशी ने कहा, एमजी देवसाहयम जी ने कहा, कि अभी भी मौका है कि इसे एक सिलेक्ट कमिटी में भेज दिया जाए, इसके सारे प्रोविजंस पर बारीकी से चर्चा हो, पब्लिक कंसल्टेशन भी इसके ऊपर करी जाए, क्योंकि लोगों के जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जो हमारे पूरे देश में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, उस पर इस कानून का बहुत गहरा असर पड़ने वाला है, जैसा कि हमने अभी सुना इस चर्चा में. तो आप सभी का आज इस चर्चा को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. डू यू वांट टू से एनीथिंग, शबनम, ऑन बिहाफ of Anhad and Satark Nagrik Sangathan? Shabnam, if you want to say anything. Otherwise, I would like to thank Dr. S.Y. Quraishi, Mr. M.G. Devasahayam, Prashant and Sanjay have had to leave, unfortunately. And thank you to Justice Lokur as well for joining us and enlightening us about this very important bill that is likely to come up and maybe even get passed in Parliament over the next few days. Thank you so much. Thank you. Shabnam has come,